Hello, good morning students. This is Neeraj Paul from LPM Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. Once again, I welcome you to online classes. As you all know students, we are making revisional videos for your upcoming examination, and in the series of revision, today I am going to explain about output devices. Yesterday I have explained about input devices. Students, as you all know, input devices are used to enter data and information into a computer. Input devices are graphic tablet, light pen, scanner, biometric device, handheld scanner. These are the input devices. Okay, that I have already explained in my previous videos, and today I am going to explain about output devices. Okay. So concentrate your mind students, look at the board and listen me carefully. Output devices. Okay. As you all know students, a computer displays the output using output devices. Okay. Output devices. Students, a computer displays the output using output devices. Let us learn more about output devices. Students, first output device is printer. Okay. प्रिंटर, सबसे पहले हम लोग प्रिंटर के बारे में जानेंगे. ठीक है. प्रिंटर इज आल्सो एन आउटपुट डिवाइस. दिस आउटपुट डिवाइस prints information on a sheet of paper. Printers can give only still output in the form of image, text or graphic. Okay, printer is an output device. It print the information on a sheet of paper. It can give only still output in the form of image, text or graphics. Okay. Now look at the board. There are two types of printer. Okay, there are two types of printer. First is impact printer and second is non-impact printer. Okay, first is impact printer and second is non-impact printer. Okay, there are two type of printer. First is impact printer and second is non-impact printer. देखिए अब क्वेश्चंस कैसे पूछा जा सकता है. How many types of printer? There are two type of printers. First is impact printer and second is non-impact printer. Impact printer का एक एग्जांपल देखिए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. This is the example of impact printer, and the example of non-impact printer are laser printer and
इंकजेट प्रिंटर. ओके, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की एग्जांपल है लेजर प्रिंटर, एंड सेकेंड इंकजेट प्रिंटर. नीचे तक दिखाई दे रहा है आप लोगों को? लेट मी सी. देयर आर टू टाइप ऑफ प्रिंटर. फर्स्ट इज impact printer and second is non impact printer. impact printer का एग्जांपल है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जांपल्स हैं लेजर प्रिंटर एंड इंकजेट प्रिंटर. क्लियर एवरीवन? यस. नाउ कम टू द impact printer. What are impact printer? Students, the character and graphic are printed by streaking on the paper. This type of printer creates noise while printing and does not produce very high quality print. The most common example of an impact printer are dot matrix printer. Okay? इम्पैक्ट प्रिंटर, जब भी इम्पैक्ट प्रिंटर का यूज हम करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा जो है नॉइज प्रोड्यूस करते हैं एंड इसकी जो क्वालिटी होती है बहुत लो क्वालिटी होती है. ठीक है, ये पेपर पे स्ट्रिकिंग करते हैं. ठीक है, पिंच करते हैं, पिंच करके जो है टेक्स्ट प्रिंट होते हैं. डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज द एग्जांपल ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर. Okay, dot matrix printer has teeny pins or hammers that strike the inked ribbon to produce the desired output. It produced only black and white output. In a from a dot matrix printer, you can print only black and white. You can take output in black and white color. Okay. It produced only black and white output. A dot matrix printer is not very expensive. Dot matrix printer बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते हैं. ठीक है, ये ब्लैक एंड वाइट आउटपुट हमें देते हैं और जब भी इनका यूज करते हैं तो ये जो है नॉइस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, नाउ कम टू द नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर. Okay, non-impact printer. Students, non-impact printer, in this kind of printer there is no physical contact between the paper and the inked ribbon. Non-impact printer में inked ribbon और पेपर से कोई कांटेक्ट नहीं होता है. ओके, द प्रिंटिंग हेड डज नॉट स्ट्राइक द पेपर, देयरफॉर अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इज क्वाइटर देन एन इम्पैक्ट प्रिंटर. इम्पैक्ट प्रिंटर की तुलना में नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो क्वाइटर है, मतलब ज़्यादा ये नॉइस प्रोड्यूस नहीं करते हैं क्योंकि ये स्ट्राइक नहीं करते हैं रिबन पे. It prints by spraying the color on the paper. Inkjet printer, this printer, inkjet printer, print the text and graphic by spraying small drops of ink on the paper. It prints faster than a dot matrix printer. It can also give colored output. Inkjet printer is the most commonly used printer for personal work. It can print up to 5 pages per minute. A inkjet printer prints by spraying small drops on the paper and it can print 5 pages per second. 5 pages per second.
And laser printer, students, laser printer uses laser beam to print the output. It is very fast. Students, laser printer print by laser beam and it is very fast. Students, it uses dry ink. It uses dry ink to print and produce high quality output. It produces black and white as well as colored output. Students, a laser printer can print up to 10 pages per minute. A laser printer can print up to 10 pages per minute. Sorry, inkjet printer can print 5 pages per minute and laser printer can print 10 pages per minute. It is the most expensive among the three kinds of printer. डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर एंड लेजर प्रिंटर में जो लेजर प्रिंटर है ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है देन द इंकजेट प्रिंटर एंड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. लेजर प्रिंटर आर कॉमनली यूज्ड इन बिग ऑर्गेनाइजेशन वेयर हार्ड कॉपीज आर रिक्वायर्ड इन अ लार्ज ग्रुप. ओके, नेक्स्ट इज प्लॉटर. ओके, once again listen me carefully. आउटपुट डिवाइसेस, फर्स्ट जो है सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रिंटर के बारे में. देयर आर टू टाइप ऑफ प्रिंटर. फर्स्ट इज इम्पैक्ट प्रिंटर एंड सेकंड इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर. ओके, इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जांपल है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. ठीक है, इट इज प्रोड्यूस मच नॉइस देन लेजर प्रिंटर एंड इंकजेट प्रिंटर. It prints by stacking on the paper. And non-impact printer, there are two examples of non-impact printer. First is laser printer and second is inkjet printer. Students, laser printer print 10 pages per minute and inkjet printer print 5 pages per minute. Okay, now come to the next output device, that is plotter. Okay, let me erase this. Okay, next is plotter. Students, plotter is also an output device. Okay, there are two type of plotter. First is drum plotter and second is flat bed plotter. Okay, there are two type of plotter. First is drum plotter and second is flat bed plotter. Now look at here, plotter. What is plotter? Students, a plotter prints vector graphic, which means it can print on a very large sheet. स्टूडेंट्स, आप लोग देखे होंगे बहुत बड़े बड़े बैनर जो है रोड पे लगे होते हैं. ठीक है, वो सारे किससे प्रिंट होते हैं? प्लॉटर से प्रिंट होते हैं. देयर आर टू टाइप ऑफ प्लॉटर, ड्रम प्लॉटर एंड फ्लैट बेड प्लॉटर. ओके, अ प्लॉटर प्रिंट्स वेक्टर ग्राफिक्स व्हिच मींस इट कैन प्रिंट ऑन अ वेरी लार्ज शीट while maintaining high resolutions. It is used to creating high quality design, graphic, chart, diagram and so on. Okay, there are two type of plotter. First is drum plotter and second is flat bed plotter. Clear? Now come to the topic, that is drum plotter. Okay, students, drum plotter, it is a type of plotter
Okay, drum plotter, it is a type of plotter. Drum plotter is a type of plotter. In this type of plotter, paper is wrapped around a rotating drum with a pin feed attachment. During printing, the drum revolves while the actual pin does the printing. A drum plotter is also known as roller plotter. इस तरह के प्लॉटर में एक ड्रम लगा होता है जिसमें पेपर क्या होता है, रोल होता है, ठीक है। ड्रम प्लॉटर इज आल्सो नोन एज रोलर प्लॉटर। ओके, यू कैन सी इन योर बुक फिगर नंबर 2.15 and figure number 2.14. There you can see the picture of drum plotter and flat bed plotter. Okay, students, flat bed plotter, it is a graphic plotter that has a flat surface. The paper is placed on the flat surface and it drawn by moving a pen. Okay, student, the flat surface on the plotter is called the flat bed, and it is a very expensive plotter. Okay, it is also used to print vector graphic such as banner, posters, charts, etc. Now the next topic, students, I will explain in my next video lecture. Till then, students, goodbye. Thank you for watching my videos.